Please sit in a comfortable meditative posture with your hands on your knees in Jnana or Chin Mudra, head, neck, shoulders, back all in a straight line, eyes and mouth gently closed. Become aware of the whole body from the top of your head to your toes. Awareness of your head, neck, shoulders, arms, chest, upper back, abdomen, lower back, hips, legs, the whole body. Shift your awareness to your breath. Normal spontaneous breathing coupled with awareness. I am breathing in and I am breathing out. And I am aware I am breathing in. I am aware I am breathing out. Let this be the form of your awareness for some time. Now bring your awareness to your Bhumadhya. Visualize here the form of either your Guru or your Ishtadevata or a brightly burning, radiant Jyoti. And maintaining your awareness on this, we shall chant the mantra Om 3 times together, followed by the Shanti mantras. Inhale deeply. Together. ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ हरि ओम तत्सत्. Keeping your eyes closed, become aware of the purpose and objective of our gathering. To strengthen the mind, to boost the bodily systems, and to connect deeper with the aim and purpose of our very existence. And towards this effect, let us begin with the chanting of the 3 mantras as given to us by Pujya Gurudev Swami Satyananda Ji. Bring to your mind the image of Mrityunjay Mahadev, that form of Shiva, who is the conqueror of disease, decay, darkness, and death. Install him at your Bhumadhya. Offer pranam to him and take the sankalpa of health, harmony, happiness. With this sankalpa, we shall chant the Mahamrityunjay mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् 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 ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Surya Narayana, the symbol of energy, vitality, and prana, the very essence of life. Install him at your Bhrumadhya and take the sankalpa of increased creativity, improved capabilities, higher wisdom, and a better discrimination. With this sankalpa, we shall chant the Gayatri mantra 11 times. I shall chant the first mantra. You will join in for the next 10 in the same rhythm, speed, and intonation. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। Next, let us invoke Ma Durga. She is Durgati Nashini. She is Kala Vinashini. She is Uma. She is Rama. She is Brahmani. She is Shakti manifest. Invite her and install her in your heart center. Offer pranam to her and take the sankalpa of the removal of difficulties, distresses, hardships, and despairs, and to replace them with hope, enthusiasm, energy, focus, dedication, hard work, perseverance, and contentment. With this sankalpa, we shall chant the Durga Dwatrinchen Namamala 3 times altogether. ॐ दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापहा
दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम ओम दुर्गा दुर्गार्तिशमनी दुर्गा पद्विनिवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधिनी दुर्गनाशिनी दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहन्त्री दुर्गमापः दुर्गमज्ञानदा दुर्गदैत्यलोकदवानला दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्मस्वरूपिणी दुर्गमार्गप्रदा दुर्गमविद्या दुर्गमाश्रिता दुर्गमज्ञानसंस्थाना दुर्गमध्यानभासिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्थस्वरूपिणी दुर्गमासुरसंहन्त्री दुर्गमायुधधारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी ओम 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 Keeping your eyes closed, experience the manifestation of the sankalpas we have taken. Hari Om Tat Sat. Next, let us move ahead into the chanting of the Shri Ramcharitmanas. We will be chanting Ayodhya Kand, Doha 248 to 258. Bring the image of the entire Shri Rama Darbar to your heart. Install them here. प्रभु श्री राम, देवी माँ जानकी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पवन पुत्र हनुमान जी. Offer pranam to them. Next, let us invoke Goswami Tulsidas ji, the composer of this divine melody. Invite him so that he may bless us with the stories of the Lord. And to begin, we shall invite Hanumanji. Wherever there is Ram Katha, Hanumanji always comes. So let us invite him
and give him a place of honor. राम कथा के रसिक तुम, बुद्धिरासि मति धीर, आइए सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सु दशरथ अजिर विहारी, सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अघतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभय साधु सम्मत अस, तीरथ आवाहन सुर सरिजस, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पिरीते, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखि मोहि पल जिमि जुग जाता, सब समेत पुर धारिय पाऊं, आपु यहाँ अमरावती राऊं, बहुत कहें सब किए ढिठाई, उचित होई तस करिय गोसाई। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दरस, देखि लहहुँ बेश्राम। राम बचन सुनि सभय समाजो, जनु जल निधि महु बिकल जहाजो, सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भय उमनहु मारुत अनुकूला, पावन पयतिहु काल नहाहि, जो बिलो की अंग ओघ नहाहि। मंगल मूरति लोचन भरि भरि, निरखहि हरषि दंडवत करि करि, राम सैल बन देख न जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, झरना झरिहि सुधा सम बारी, त्रिविध अताप हर त्रिविध बयारी, बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनि बन छवि केहि पाही। सरनि सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, पैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग, पोल किरात भिल्ल बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरि भरि परन पुटीर चिरूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी, सबहि देहि करि विनय प्रणाम, कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नाम, देहि लोग बहुमोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि, कहहि सनेह मगन मृदु बानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दरसनु राम प्रसादा, हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रज उपजहि जस राजा। यह जिय जानि सको च्युत जी, करिय छोहु लखिनेहु, हम ही कृतारथ करन लगी, फल तृण अंकुर लेहु, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, देव काह हम तुम्हि गोसाई, ईधनु पात किरात मिताई, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव गण घाति, कुटिल कुचाली कुमति कुजाति, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दरसुन पाप करत निसिबासर नाही, नहीं पट कटि नहीं पेट अघाही, सपनेहु धर्म बुद्धि कस काहू, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्ह के भाग सराहन लागे।
लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावही। बोलनि मिलनि सिय राम चरण सनेहु लखि सुख पावही। नर नारि निदरहि नेहु निज सुनि कोल बिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुबंश मनि की लोह लय लौका तिरा। बिहरहि बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर भये पीन पावस प्रथम। पुरन जन नारी मगन अति प्रीति बासर जाहि पलक सम बीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाई सादर कर सरिस सेवकाई। लखान मरम राम बिनु काहू माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीन्ही तिन्ह लहि सुख सिख आशीष दीन्ही। लखि सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी महीन बीचु विधि नीचु न देई। लोकहु वेद विदित कबि कहहीं राम विमुख थलु नरक न लहहीं। यहु संशय सबके मन माही राम गवन विधि अवध कि नाही। निसिन नींद नहीं भूख दिन भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच। कीन्ही मातु मिस काल कुचाली ईति भीति जस पाकत साली। केहि विधि होई राम अभिषेकु मोहि अवलोकत उपाउन एकु। अवसि फिरहि गुर आयसु मानी मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहेउ बहुरहि रघुराऊ राम जननी हठ कर बिकि काऊ। मोहि अनुचर कर केतिक बाता तेहि मह कुसुम बाम विधाता। जौ हठ कर उन निपट कुकरमु हर गिरि ते गुर सेवक धरमु। एक जुगति न मन ठहरानी सोचत भरहि रैनि बिहानी। प्रात नहाई प्रभु ही सिर नाई बैठत पठ ऋषय बोलाई। गुरपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुपाई। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आई। बोले मुनि बरु समय समाना सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु राजा राम स्वबस भगवानु। सत्य संध पालक श्रुति सेतु राम जन्म जग मंगल हेतु। गुर पितु मातु बचन अनुसारी खल दलु दलन देव हितकारी। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु को न राम सम जान जठारथु। विधि हरिहरु ससिर विधि सिपाला माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखहु नीके राम रजाई सीस सबहि के। राखे राम रजाई रुख हम सब करहित होई। समुझ सयाने करहु अब सब मिलि सम्मत सोई। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु मंगल मोद मूल मग एकु। केहि विधि अवध चलहि रघुराहू कहूँ समुझ सोई करिय उपाहू। सब सादर सुनि मुनि बर बानी नय परमारथ स्वारथ सानी। उतरु न आवलोग भय भोरे तब सिरु नाइ भरत कर जोरे। भानुवंश भये भूप घनेरे अधिक एक ते एक बड़ेरे। जन्म हेतु सब कह पितु माता करम शुभ देहि विधाता। दलि दुख सजई सकल कल्याणा अस असीस राउरि जग जाना। सो गोसाई विधि गति जहि छेकी सकई कोटारी टेक जो टेकी। बूझिय मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु
सुनि स्नेहमय बचन गुर पुर उमगा अनुरागु। तात बात फुरि राम कृपाही, राम विमुख सिधि सपने हु नाही। सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरधत जहि बुध सरबस जाता। तुम कानन गवनहु दोउ भाई, फेरि अहि लखन सिय रघुराई। सुनि सुबचन हर्षे दोउ भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेज बिराजा, जनु पिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे, फल जग जीवन अभिमत दीन्हे। कानन करउँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। अंतरजामी रामु सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान। जो फुर कहहुँ नाथ निज, कीजिए बचन प्रवान। भरत बचन सुनि देखि सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाढ़ी तीर अबलासी। जय सिया राम जय जय सिया राम। गाचह पार जतनु हिय हेरा, पावती नावन बोहित बेरा। जय सिया राम जय जय सिया राम। और करिहि को भरत बड़ाई, सरसी सीपि सिंधु समाई। जय सिया राम जय जय सिया राम। भरत मुनि मन भीतर आए, सहित समाज राम पहियाए। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोले मुनि बरु बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भय कुभाऊ। पुर जन जननी भरत हित, होई सो कहिय उपाऊ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। बार बार बर मागहूँ, हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भगति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नामि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम।
keeping your eyes closed. The entire Ayodhya Nagari with the royal family, with the administration, with everybody, citizens, the poor, the rich, the young, the old, everybody has gathered to meet Sri Ram. Coming to know about the demise of the king, Sri Ram grieves and then conducts the various activities needed to be conducted for the departed. Sage Vasishtha guides him. After all that is completed over the next few days, then they sit quietly, the sorrow in the heart, aware of the situations at present. Then, one by one, everybody starts very diplomatically trying to gauge the mood of Sri Ram. Would he be amenable to come back to Ayodhya? You see, he had left Ayodhya by the order of the king. But then at that time, the king was there to take care of Ayodhya. Now, the king is no more, and Bharat refuses to ascend on the throne. The throne can't be left empty. So, now they are trying to find out if Sri Ram accepts to come back. Sage Vasishtha tries to explain everybody, one after the other. Finally, even Bharat starts discussing, talking. But Sri Ram is very quiet, doesn't speak much, just listens to what people are saying, making it clear that he is not interested. Observe, something wrong has happened to me. At least that is what I perceive. And then I am being unfairly punished for that. And when the situation is changing, one would immediately want to go back, not stay in the forest. But here was a very paradoxical situation. The entire city of Ayodhya, full of all facilities, comforts, was living on roots and tubers and a very simple living. They were extremely upset and sad and dejected. Whereas in the forest, Prabhu Sri Ram with Ma Janaki and Lakshmanji, they live royally, not external royally, but internally, very happy, very contented, very joyous, discussing about dharma, discussing about various aspects of the Shastras, benefiting the forest dwellers around him. But when he is asked to go back to Ayodhya, he politely declines. Sri Ram knows the purpose of his life. He is not looking for comforts, he is looking at completing the purpose of his life. The reason why Mahavishnu took avatar as Sri Ram was that a demon named
Ravana had to be destroyed, something which nobody was able to do. When he descended into the human form, Sri Ram did not forget the divine nature of his birth. We have to also try and learn from this. Once we have realized the path of what should be done, then we should walk on that path, not on the path what is dear to us, or the path which others tell us to, or the path which we are being forced upon. Swadharme nidhanam shreya paradharmo bhayav. My dharma is to be in the forest for 14 years. And he said, I will be, because that is the promise he has made the king. Holding this dear to us, let us get ready to conclude today's chanting. The katha pauses here for the day. All the dignitaries who have come, get ready to make a move. Let us offer our respects and shraddha to them. कथा विसर्जन होता है सुनहु वीर हनुमान जो जन जहाँ से आई हों तह तह कर उपयान बाजा बाजत गृह गए भरद्वाज के द्वार सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलास सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम. And now let us get ready for our Navaratri Aradhana. Bring to our mind the image of that transcendental divine being, she whom even Brahma, Vishnu, and Mahesh worship, the transcendental, the supreme, the primordial. She is Mahasamratni. She is Tripura Sundari. She is Para Tarika. She is Saundarya. Offer pranam to her. Offer pranam to Bhagavad Pad Adi Shankara, Bhagwan Bhashyakar, the composer of Saundarya Lahari, and offering pranam to both of them. Let us get ready for the chanting. Those of you who are able to should sit in Vajrasan. Bring your hands in Avahaniya Mudra. We shall chant from verse 89 to 99.
The sum put verse 25 in the beginning and at the end. To start the Bija mantras and to conclude the Prarthana. Namaste, Namaste. Let us begin. Om Aim, Om Hrim, Om Shrim, Om Krim. त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता ये ते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा नखैर्नाकस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरूणां दिव्यानां हसत इव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्थेभ्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमनिशमह्नाय ददतौ कदा काले मातः कथय कलितालक्तकरसं पिबेयं विद्यार्थी तव चरणनिर्णेजनजलं प्रकृत्या मूकानामपि च कविताकारणतया यदा धत्ते वाणी मुखकमलताम्बूलरसताम् पदन्यासक्रीडा परिचयमवारब्धुमनस चरन्तस्ते खेलं भवनकलहंसा न जहति स्वविक्षेपे शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणित छलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्च त्वं गृहिण हरिरुद्रेश्वरभृत शिवस्वच्छच्छाया घटितकपटप्रच्छदपट त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागारुणतया शरीरी शृङ्गारो रस इव दृशां दोग्धिकुतुकम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते शिरीषाभाचित्ते दृशदिव कठोरा कुचतटे भृशं तन्वी मध्ये पृथुरपि वरारोह विषये जगत्त्रातुं शम्भो जयति करुणा काचिदरुणा समानीतपद्भ्यां मणिमुकुरतामम्बरमणि भयादास्यादन्तस्तिमितकिरणश्रेणिमसृण दधाति त्वद्वक्त्रं प्रतिफलनमश्रान्तविकचं निरातङ्कं चन्द्रान्निजहृदयपङ्केरुहमिव कलङ्ककस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं कलाभिः कर्पूरैः मरकतकरण्डं निबिडितम् अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं रेक्तकुहरं विधिर्भूयो भूयो निबिडयति नूनं तव कृते पुरारातेरन्त पुरमसि ततस्त्वच्चरणयो सपर्या मर्यादा तरलत्करणा नाम सुलभा तथाप्येते नीता शतमखमुखा सिद्धिमतुलां तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाद्याभिरमरा कलत्रं वैधात्रं कति कति भजन्ते न कवय
श्रियो देव्याः को वा न भवति पतिः कैरपि धनैः महादेवं हित्वा तव सति सती नाम चरमे कुचाभ्यामासङ्ग कुरवकतरोरप्यसुलभ स्वदेहोद्भूताभिः घृणिभिरणिमाद्याभिरभितो निषेव्यां नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः किमाश्चर्यं तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो महासंवर्ताग्नि विरचयति नीराजनविधिम् गिरामाहुर्देवीं गृहिणीमागमविदो हरे पत्नीं पद्म्यां हरसहचरीपमद्रितनयां तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनिस्सीममहिमा महामाया विश्वं भ्रमयसिर्परब्रह्म महिषी त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानामपि शिवे भवेत् पूजा पूजा तव चरणयोर्या विरचिता तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे स्थिता येते शश्वन् मुकुलितकरोत्तं समुकुटा नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य Keeping your eyes closed, connect to the divine, cosmic, transcendental form of Ma. Hari Om Tat Sat. And now let us move ahead with the chantings dedicated to the Trigunatmika Swarupa of Ma. We shall begin with the Siddha Kunjika Stotram. शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापशुभो भवेत् न कवचं नार्गलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनम् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वायोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोच्चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हौं सं लं क्षं फट् स्वाहा ॐ नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि नमः कैटभहारिण्यै नमस्ते महिषार्दिनि नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निःशुम्भासुरघातिनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै
ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं धूर्जटे पत्नीं वां वीं वुं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 जम्बनादिनि भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं क्षं धिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं खुं खेचरी तथा सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा। ॐ इति श्री रुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रं सम्पूर्णम्। Keeping your eyes closed, meditate on the Trigunatmika form of Ma. I shall chant the Dhyana mantra for each of the three, and you should try and connect to that form of Ma. Shri Mahakali Dhyanam. ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौच्छयिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ श्री महालक्ष्मी ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशु गदेषु कुलिशं पद्मं धनुःकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैर्भिमर्दिनीमिह महा लक्ष्मीं सुरौजो भवान्। ॐ श्री महासरस्वती ध्यानम्। ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। ॐ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताभ्यो नमः। लं पृथिव्यात्मकं गन्धं कल्पयामि, हम आकाशात्मकं पुष्पं कल्पयामि, रम अग्न्यात्मकं दीपं कल्पयामि, वम अमृतात्मकम् अमृतमय महानैवेद्यं निवेदयामि, सं सर्वात्मकं सर्वोपचार पूजां संकल्पयामि। नमः। The Saptashloki Durga, the 7 verses extracted from the entire Durga Saptashati, representing the whole text. शिव उवाच देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। दिव्युवाच शृणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्टसाधनं मया तवैव स्नेहेन
आप्यं वा स्तुति प्रकाश्यते। ॐ अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र महामन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्ठुवादिनी छन्दांसि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृश्यमोहाय महामाया प्रयच्छति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं रोगानशेषान् पहंसि तुष्टा हृष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं क्लीं ॐ दुर्गा सप्तश्लोकी सम्पूर्णा। Keeping your eyes closed, gaze on the divine form of Ma. And to conclude, the Tantroktam Devi Suttam. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां हृद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ते दिव्यै नमो नमः। चितिरूपेण या कृत्स्नम् एतद्व्याप्य स्थितां जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंश्रयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मात की जय। अटल छत्र की जय, साके दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाली मैया की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर। Sit quietly for a few moments.
and connecting with this form of Ma. Allow her energy to transform you completely. The removal of negativities, upgrading of desires, the emergence of a higher consciousness. And now to conclude, Shanti Path. Inhale deeply. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्ति भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Hands in pranam mudra. त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरिः ओम् हरि ओम् तत्सत् Gently rub your palms against each other. Place them on the closed eyes. And then when comfortable, move the palms away. Open your eyes. Hari Om. Tatsat. Namo Narayan. नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। Namo Narayan. So today is Ashtami, the highest point. And it is important because the Lord has said in the Srimad Bhagavad Gita that He has two forms of Prakriti, Shakti, Devi. One is Apara and one is Para. Para is the transcendental and the Apara is on the lower level. Of course, even that lower level is much higher for us. And this Apara Shakti is Prakriti Ashtadha, eightfold forms of Prakriti. And today, on the day of Ashtami, is the day when this Apara
Prakriti is transcended. You come in contact with the Para Prakriti. And tomorrow on Navami, we transcend that too. So that on Vijayadashmi, we are able to defeat the 10-headed monster who has kidnapped Sita. Here Sita represents the Jivatma who is caught into the senses, the 5 karmendriyas and 5 jnanendriyas, and is stuck in it. And this happens, the release happens only when the 10-headed monster is beheaded. So, today is the day to try and remember that, to try and connect to that. And when we are trying to work on that, when we are trying to bring the sattvic aspect within us, we have to remember the story of Rakta Bija. Yesterday we spoke about the demons also having a better upgraded version, let us say. And what do they do? The Rakta Bij is the moment you kill the demon, blood splatters out, and with every drop of blood, there are those many demons who come up. That is Rakta Bija. And no amount of weapon are able to destroy him. Finally, Devi says to Kalika, Vistirnam Vadanam Kuru. Expand your mouth so that everything goes in and gets destroyed. Not a drop falls on the ground. And if there's not a drop falling on the ground, the demon will be destroyed. This is an important aspect which we need to keep in mind when we try and work with these upgraded versions of these demons. Remember, the demon is within us. There's no need to demonize somebody outside. We have to work on these demons. Of course, it is not possible to finish it in 8 days, 9 days. But these are symbolic. Step by step, we have to progress in life. How much actual time it takes is up to us. And how much we can connect to the grace of Ma and get her to help us progress. So, today on this day of Ashtami, let us try and become aware of the eightfold form of Prakriti. Bhumi, Apaha, Analaha, Vayuhu, Kham, Manaha, Buddhihi, Evacha, and finally Ahankar. These are the 5 different dimensions of the Ashtadha Prakriti. And this is what has to be transcended. The 5 elements, the Man, the Buddhi, Ahankar. And when we are able to transcend that, then we go to the highest form and then beyond that. So that is the long journey we have to take. Let us try and become aware of these eightfold forms. Every Saturday, we try and connect with the Panchamahabhuta Tattvas. So that is one thing which we should do today. And try and become aware of the Buddhi, the Manas, and the Ahankar. Ponder over these, delve over these, try to understand what are the meanings of this, the technical meanings, the practical meanings.
and how we need to transcend them to connect to the divine. So let us keep this as the assignment for today, and we meet again tomorrow. Hari Om Tat Sat. Namo Narayan. Narayan Swamiji. Namo Narayan. Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan ji. Namo Narayan Swamiji. Swamiji, you will be sharing Swami. pictures of Kanya Pujan. Yes. We will be doing that. Around what time, Swamiji, Kanya Pujan ka Oh, samay अच्छा? that we have to discuss with that I still don't know. वो हमको बतलाएंगे. But once they send me the pictures, I will send you, because I am not at the place where the puja is happening. I have had to come to Bhopal for an important work. So I am here in Bhopal for last 3-4 days and tomorrow also. So somebody will be doing it on behalf of all of us. Okay, Swami. Okay. ji. Namo Namo Narayan Swamiji. Namo Narayan. Namo Narayan.